Hello all of you once again. Now today we are going to start the session with the differentiation of the different forms of market. In the earlier sessions we have studied about the various forms of market: perfect competition, monopolistic competition, monopoly, oligopoly. These were the basic different forms of competitions which are running in the market. So moving ahead with the same topics, now we are going to start the differentiation between the three forms of market, that is perfect competition, monopolistic competition and monopoly. So starting with the first point, number of buyers and sellers. In this session we are going through a summary of all the three market forms जिनके बीच में हमें डिफ्रेंसिएशन भी देखना है with the summary of each and every feature. हर फीचर के बेसिस पे we'll discuss the differentiation की what is the difference between perfect and monopoly, monopolistic and monopoly on the basis of different factors we have discussed. Starting with the first one, number of buyers and sellers. So in perfect competition there are large number of buyers and sellers. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो नंबर ऑफ सेलर्स है, नंबर ऑफ बायर्स है, दे आर लार्ज, बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स है. In monopolistic competition, same is there. There are large number of sellers and large number of buyers. We can take an example of toothpaste. We can take example of soaps. So there are large number of buyers and large number of sellers in these types of industries. And in monopoly, there is a single seller. There is only one seller, but the buyers are in large number. So the difference between on the basis of number of buyers and seller, perfect competition there are large number of buyers and seller. In monopolistic competition there are large number of buyers and seller, but in monopoly there is one single seller and large number of buyers are there. Moving ahead to the second point, that is the product. On the basis of the product, the difference is that in perfect competition we are having homogeneous product. होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स विद द प्रोडक्ट विच इज सेम इन ऑल द रेस्पेक्ट्स. जो प्रोडक्ट हर तरीके से शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी हर तरीके से सेम है, दैट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. तो इन होमोजीनियस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जितने भी फर्म्स होते हैं, दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर फर्म का जो प्रोडक्ट है, इट इज एग्जैक्टली सेम. In monopolistic competition, there is a product differentiation. We have discussed earlier also this topic. Product differentiation is the difference in the product on the basis of size, quality, quantity. Some unique feature is there, like the soap industry is there. So Lux is a different soap, Dettol is another soap. So her product is having a different USP in it. So there is a product differentiation. The product line is same, but each product is different from one seller to another. And in monopoly it can be homogeneous, it can be product differentiation, क्योंकि monopoly के अंदर only one seller is there, a single seller is there. So it is his choice only कि whether he want to sell a perfectly same product in the market or he want to make a differentiation in the product. So it is all in the hands of monopolist. Now according to the third point, the price. In perfect competition there is a uniform fixed price, because in perfect competition the firm is price taker. वो प्राइजेस मार्केट से एज इट इज इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करती है, वो प्राइस एज इट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे हैव टू एक्सेप्ट इट. तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म इज प्राइस टेकर. तो द फर्म में प्राइजेस जो है इट रिमेन्स यूनिफॉर्म. द परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो फर्म है, इट डोंट हैज एनी कंट्रोल over the price. He cannot change the prices on his own. In monopolistic competition, not uniform because of product differentiation. क्योंकि हर प्रोडक्ट में अपना एक यूनिक फीचर है, हर प्रोडक्ट अपनी एक यूएसपी मेंटेन करके चलता है, तो प्राइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन सेलर टू अनदर. एंड इन मोनोपोली नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोली के अंदर भी प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, क्योंकि there is a price discrimination. As we have discussed this topic also, price discrimination means charging different prices from the different buyers for the same product. एक ही प्रोडक्ट की जब हम अलग अलग प्राइजेस अलग अलग कस्टमर से चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट हैपन्स इन मोनोपोली. एंट्री ऑफ द फर्म्स. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज फ्री एंट्री. इन monopolistic
not absolute freedom. There is not an absolute freedom. The firms can enter, but there are little bit legal complications, legal compliances which they have to follow, the legal procedures which they have to follow, and then they can enter into the industry. And in monopoly it is not possible, because there is only one single seller who sells the commodity, and if someone else enters into the industry, कोई और enter होता है industry के अंदर, तो then the monopoly will vanish, the monopoly will not exist further. Mobility means the movement of factors of production. So in perfect competition there is a perfect mobility, because every producer is having the same product. The factors of production are easily movable from one seller to the another. In monopolistic there is an imperfect mobility, and in monopoly also there is an imperfect mobility, because every seller has its own USP. उसको अपनी USP maintain करके चलनी पड़ती है. The factors of production cannot move further on to the another seller. Then moving ahead with the next topic is selling cost. Selling cost in perfect competition it is not required, because the product line is same. They are selling homogeneous product. क्योंकि प्रोडक्ट सबका सेम है, तो देर इज नो नीड ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट मीन एडवर्टीजमेंट बेसिकली. वेरी सिग्निफिकेंट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बिकॉज एवरी सेलर इज हैविंग अ यूएसपी इन इट्स प्रोडक्ट. हर सेलर का अपना जो प्रोडक्ट लाइन इज सेम. सब सोप ही बेच रहे हैं, लेकिन हर सोप की अपनी एक यूएसपी है. तो वो यूएसपी, वो यूनिक फैक्टर जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके चल रहे हो, यू नीड टू टेल इट टू द कंज्यूमर. उनको बताना होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर, so there it is very important to have the advertisement cost. And monopoly के अंदर भी it is not required in monopoly, because he is only the single seller in the market for that particular commodity. So in monopoly there is no need for the advertisement. Degree of price control. In perfect competition no control over the price, because it is the firm under perfect competition is price taker. The industry decides the price, and it is as it is taken up by the perfect competition firm. They are having partial control. In monopolistic competition the firms are having partial control over the price. Little bit changes they can make in the prices of the product. And in monopoly full control over the price. Monopoly के अंदर there is only single seller, so he has full control over the price of his commodity. And the last one is firm's demand curve. Elastic and inelastic elasticity means the movement of the demand. कि प्राइजेस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड कितना मूव करेगी, दैट इज इलास्टिसिटी. सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि लिटिल बिट चेंजेस इन द प्राइजेस कैन मूव द डिमांड हाईली अप एंड हाईली डाउन, क्योंकि एवरी सिंगल सेलर इज सेलिंग द सेम कमोडिटी एट द प्राइजेस विच आर गिवन बाय द इंडस्ट्री. तो उसके अंदर जो बायर्स होते हैं दे आर हैविंग द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइजेस विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट. तो लिटिल बिट चेंजेस हैज बीन डन. अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस प्राइसेस के अंदर किया जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है डिमांड के ऊपर. सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक. इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इट इज मोर इलास्टिक, बिकॉज द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. सोप के अंदर आपके पास बहुत सारे सोप्स अवेलेबल है. अगर एक सोप की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होगी तो द कस्टमर can move their choice to another commodity, another soap. So here the demand is more elastic. Little bit changes in the price, but the demand will change more. अगर prices 10% से increase होती है तो demand will decrease by 20%, 30%. The change is more in this monopolistic. And in monopoly it is less elastic, because they are not having any substitute. क्योंकि जो बायर्स है दे आर नॉट हैविंग एनी सब्स्टिट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट. अगर प्राइसेस चेंज होती है, प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो वो बहुत ज्यादा अपनी डिमांड को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी सब्स्टिट्यूट फॉर इट. उनको लेना पड़ेगा, बट दे कैन डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इट, सो द डिमांड इज लेस इलास्टिक. सो इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट. थैंक यू.